Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to cover a module number 7, that is dimensioning and tolerances. This module is further divided in two parts. In first part, we will discuss dimensions, learning objectives. At the end of this lecture, you would be able to learn how you can dimension and how the dimension is used in different engineering graphics, products, objects, and so on. And then you will be able to learn some elements of dimensions, and finally you will be able to understand the systems of a dimension. Introduction. A drawing without a dimension is basically a meaningless. So dimensions are necessary to show the exact size of an object. So dimensioning is basically the process of specifying the part information by using of line, numbers, symbols, and notes. And the important aspects of dimensioning are units of measure, second one is the symbol, and the last one is the notes. Under the units of measure, you have to use the most convenient unit of measure like millimeter, angles that are shown in degrees. And for the case of symbols, you have to incorporate it to indicate the specific geometry. And for nodes, you have to use some specification of a particular feature or to give the necessary information. Dimensioning basic. So a complete detailed drawing include multi-views and the dimensions, which provide the shape and size description. So there are two classification of dimension. First one is the size and second one is the location. So size dimension are placed directly on the feature to identify the specific size, or they may be connected to a feature in the form of a note. And the location dimension is used to provide the relationship of a feature of an object. Notes. And notes are a type of a dimension that generally identify the size of a feature or features with written specifications that are more detailed than a numerical value. For example, a note for a counter board gives size and identification of the machine process used in a manufacturing. So there are two types of nodes. First one is the local nodes, and the local nodes are connected to specific features on the views of the drawing. And these are the some typical examples of the local nodes, like 4 times x diameter 6. It means कि आपके पास 6 सर्कल्स हैं जिनका diameter 6 है, और सॉरी आपके पास 4 सर्कल्स हैं और जिनका diameter जो है वो 6 है. इट मीन्स कि आपने कहीं पे शेम्फर्ड या एंगल पे एक लाइन ड्रा की है और उसी तरह की सेम एक और लाइन आपने ड्रा की, मतलब टू लाइन है जिनका एंगल 45 डिग्री है. दिस इज सेम एक सर्कल है और उसका डायमीटर 3 है, और जो उसके अंदर बोर होगा उसकी होल के अंदर, उसका जो टर्निंग जो आपका बोर है उसका जो डायमीटर है वो 11.5 है, और जो एंगल हो रहा है उसके फ्लोर्स का वो 86 डिग्री है. सिमिलरली यहाँ पे एम मीट्रिक 12 डाया का आपके पास टूल है, और जो आपने उसकी जो कट करना है थ्रू होल डेप्थ जो उसमें जानी है वो 1.25 है. ठीक है, तो ये होल की स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पे बताई जा रही है. Okay, second one is the journal notes, and the journal notes are placed separated from the views and relate to the entire drawing. Remember, local notes जो थे वो आपके किसी particular feature के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि journal notes आपके overall drawing की dimension को represent करने के लिए यूज करते हैं. और जो इनकी typical examples हैं वो हमारे पास इस तरह से हैं. Let's say कि finish all over rounds and fillers whose radius is 0.06 and remove all the sharp edges. तो इस तरह की जो जनरल स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन आपको जनरल नोट्स के सेशन के अंदर मिलती है, जो कि बिल्कुल टाइटल ब्लॉक के लेफ्ट साइड पे आपको मिलते हैं, उनको हम जनरल नोट्स का नाम देते हैं.